Research is an integral part of like biochemistry. Without research, one can't do anything. One can't like explore anything. So research is important part. And without writing manuscripts, like without publishing research, the research will not be acknowledged if we don't like publish them. So what are actually the basic features, the basic like themes, what are the requirements, and what are the norms of actually the manuscripts? So we will be discussing that. So first of all, first thing first, observation plus recipes. So we have to make the difference between observation and like what is the difference between the observation that is dealing in science and the observation that in the normal life. So we have to make the difference to make an observation a scientific observation and a scientific research actually. So this is an example of this is an example actually. Children have 20 deciduous baby teeth. So this is a statement actually that children have 20 deciduous baby teeth. So this is an observation about the real world. So this is a real world observation, but it is not a fact and even not a complete scientific statement. So it is not complete. It is not a fact. Maybe some babies, they have less than 20. Some babies may have more than 20 deciduous teeth. Maybe like a girl, maybe different. They have different number of teeth than a boy. So it only becomes a scientific observation when it comes to definition and qualifiers. So uh, mm, this is just an observation, but if how it become a scientific observation when it is linked and added with definitions and qualifiers, how it will be done, like check it out. The observation, children have 20 deciduous teeth, can be made scientifically meaningful by describing the recipe that generates it. A recipe such as, I looked in the mouth of 25 5 years old boys and 25 5 years old girls in a garden day nursery school in Cleveland, Ohio on Monday, May 24, 2005, and found that 23 boys and 25 of the girls have 20 visible teeth. So now this is a scientific observation with like how I identify them, how I like measure the observation. So this observation will not be a scientific observation unless it is added with some scientific with the recipe, with the tool that I have measured the observation. Up till now it's clear. Is it clear? जी सर, एक Yes, दफ़ा फिर sir. से इसको बता दें कि इसमें अच्छा, मतलब अगर हाँ, अगर कोई और स्टूडेंट अगर इसको एक्सप्लेन करें जिस तरह जितनी समझ आई है तो वो एक्सप्लेन कर दें, दैट विल बी दैट विल मोर गुड. Tuba is there. Tuba, जी सर। आप बताएं ये लाइक अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इस स्लाइड के बारे में बता दें जस्ट जी लाइक सर, मैं जितनी आपसे समझ. यही मैंने जी ही जी, पूछा है आपसे कि एक दफ़ा इसको रिवाइज़ कर दें प्लीज़। जितनी आपको समझ आई है वो बता दें चलें. कि मतलब इसमें कुछ हाइपोथेसिस होती हैं जब हम किसी भी चीज़ के बारे में कंक्लूड करते हैं और वो साइंटिफिक ज़रूरी नहीं है वो हो भी और नहीं भी होती साइंटिफिक स्टेटमेंट, लेकिन जब हम उसको साइंटिफिक एनालिसिस के साथ उसको रिलेट करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं तो फिर वो फैक्ट बनता है और फिर हम उसको मतलब करते हैं, उसको मायदा, स्टेटमेंट के तौर मायदा पे इज कह देयर. सकते हैं। जी जी ठीक जी, है, मैंने तुबा ठीक है. मायदा, सर मैं एक्सटेंड कर दूं? जी आप कर दें प्लीज.
मुझे जितनी समझ आई है, मैं सिर्फ एक वो बताने लगी हूँ। मुझे यहाँ तक ये समझ आई है कि कोई भी चीज जब तक आपके पास उसकी एक पूरी रेसिपी नहीं होगी, जैसे अब इफ यू कम टू मी एंड यू से कि यार मैंने ये बनाया है, कोई जाके कहता था एंड आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, देन आई विल बी लाइक यार आई डोंट नो इफ इवन इफ इट्स पॉसिबल और नॉट। लेकिन अगर वो बंदा मुझे उसके सारे प्रूफ्स दे रहा है कि यार मैंने इसको इस तरह से किया, फिर मैंने ये किया, तो देन आई एम गोना बिलीव इट। तो कोई भी जब हाइपोथेसिस बनती है, उसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक फैक्ट्स जो होते हैं या नहीं भी होते, उनके लिए एक रेसिपी जो होती है वो जरूरी है ताकि आप उसको प्रूफ कर सको। उसके प्रूफ के बगैर आप वो चीज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सम अदर पर्सपेक्टिव, किसी और तरीके से कोई और एक्सप्लेन कर दें। इट्स अ गुड पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यू यू हैव एक्सप्लेन वेरी वेरी वेल एक्चुअली। कोई और एक्सप्लेन कर दें। फरियाल इज सर देयर। मैं फरियाल, बताऊं? जी जी, आमना आमना प्लीज। सर जैसे कि यहाँ एक ऑब्जर्वेशन, नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है कि जो चिल्ड्रन है उनके बेबी टीथ है 20, ठीक है, बट इसके अंदर कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं है। जब तक ये रेसिपीज के साथ ऐड होगी, जब इसमें रेसिपीज ये हैं कि माउथ चेक किया गया, ठीक है, 25 ईयर्स ओल्ड बॉयज का एंड गर्ल्स का, उनको गार्डन में कलेक्ट इस तरह किया गया, तो ये एक रेसिपी है। और विदाउट रेसिपी जो है ना, ऑब्जर्वेशन कंप्लीट नहीं होगी। मतलब कि सिंपल ऑब्जर्वेशन है तो ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन रेसिपी के साथ ही बनेगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इट्स ट्रू इट्स ट्रू। हु विल एक्सप्लेन नेक्स्ट, लाइक थोड़ा सा अगर इसको और एक्सप्लेन कर दें। हुदा इज देयर, हुदा नदीम। मुंतहा, मुंतहा, यू देयर? यस सर। जी सर मुंतहा। मुझे मुझे ये समझ आई है कि मतलब एक स्टेटमेंट है दैट चिल्ड्रन हैव 20 बेबी टीथ, लेकिन ये स्टेटमेंट जो है इसको ना तो एक फैक्ट समझा गया और ना एक कंप्लीट साइंटिफिक स्टेटमेंट कंसीडर किया गया। ऑब्जर्वेशन थी ये, और उस ऑब्जर्वेशन के साथ जब डिफरेंट रेसिपीज और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो है वो ज्वाइन हुए, लाइक देखा गया कि हमने देखा कि 25-year-old बॉयज एंड गर्ल्स दे हैव विजिबल 20 टीथ्स। तो यहाँ से एक एक्सपेरिमेंट, एक रेसिपी के थ्रू जो है वो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन थी वो एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन में कन्वर्ट हो गई, यानी कि हमें जो है वो हमने एक स्टेटमेंट जो थी उसको प्रूव किया और हमने जो है वो शो करवाया कि हाँ ये बात जो है वो सच है। मतलब एवं कोई भी बात नहीं कर देते। मुझे समझ आइए कि एक एक्सपेरिमेंट होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन जो है वो जरूरी है, जो उसको जो है एक फैक्ट बनाती है और जो है वो उसको इट कैन बी डन by the qualifiers. Okay, very well, very well. So it simply means that science will believe observation if it is added with the prescribed recipe. अगर इसका प्रोटोकॉल नहीं है, रेसिपी नहीं है, so science will not believe. आम बंदा तो believe कर लेगा, the common man will believe what you are saying, but science will not believe. Science will believe your statement. This is a statement only if it is associated with the recipe, that how you how you identify this fact, how on what basis you are talking about this fact. Like maybe now it is like in Ohio it is 20, maybe in some other country it is like more or less. In other states maybe it is more or less, or like it may be different. So based on the recipe, it has like children have 20 deciduous baby teeth. So it is only a scientific fact if that is associated with only with the recipe provided. So next is the standard form of recording meaningful scientific observation. So this is actually the standard form of recording meaningful scientific observation. Observation with the recipes is actually the scientific paper. So now we got to understand that the paper are actually the observations plus their recipes. So this is what actually the scientific papers are. And wait for a while. And next is a research project has not been contributed to science until its results has been reported in a paper, the observation in which are accompanied by complete recipes.
So a scientific project, a research project will be incomplete unless the results are actually published in a way like in a paper, and that already we have talked that the observations, the research observations, and they must be accompanied with their complete recipes. जी बताएं क्या समझ नहीं आ रही Sorry, sir. ओके सो इनके रेसिपीज अगर हम ऑब्जर्वेशंस के साथ ऐड कर दें so that will be like a scientific paper and the research project could be complete then and begin with now like how we can write a scientific paper like start with the all important recipes, the materials and methods. So first of all, we have to have the recipes actually, the materials, the things, the equipment we use, and the criteria, the way that we have executed a specific experiment. So the materials and method is the first of all that we have to start with. Next, collect your data and draft actually the results. So first of all, you have the materials and methods. You need to do your research with with the techniques, with the recipes. Like you have selected a specific area of research, a specific location where you need to conduct research, and then you execute your research. Then you have with you some results, and those results will be saved with you. So first of all, you have to write with the materials and methods, then collect your results, and as your experiments end, formulate the outline of discussion. So discussion should be after the results. So once you get the results, you need to outline to have outlines of discussion and then write a conclusion. So first materials and methods of your of our research article, then to write the results, and then to write the discussion, and then to write the conclusion. Now go back and write the historical context, the introduction. So now we have done with writing, materials and methods, results, discussion, conclusion. In this context, now we have to write the historical context, what people have done, why this topic is important. Like we have to go in the history, and that history writing is known as, and that is the introduction of the paper. ठीक है. Okay, and then while writing conclusion, now go back to the historical like background, and that will be the introduction. And only after all these have been written and tied up, you will have sufficient perspective to write now the title and the abstract. So title and the abstract of the research article is they are the jobs to be done at the end. So first, materials and method, we have to write them, the results, the discussion, conclusion, the intro, and title and abstract. Actually, they are the things that in this sequence we have to write them. But when you go through a research article, you will see a different format. First, you will see the title, then the abstract, then the introduction, then the results, the materials and method, the results, the discussion, the conclusion. So all these things, even though they are written in different formats, but they will be done in the way that I have described here. समझ आ रही है इसकी? Yes, sir. Yes, Anybody sir. could explain this? कोई है जो इसको explain कर सके जो इस slide पे हमने पढ़ा है? सर हमने जो सी ऑब्जर्वेशन की है उसके ऊपर हम अब पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम लोग Exactly. मटेरियल्स और मेथड्स को फॉलो करेंगे। जो सा ये फॉर्मेट सामने लिखा हुआ है इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले सबसे मटेरियल्स और पहले मेथड्स को, लिखेंगे, ठीक है. देन रिजल्ट की तरफ आएंगे, फिर बिल्कुल डिस्कशन करेंगे और उसमें उसके बाद कंक्लूजन करेंगे जो बिल्कुल ठीक कि है. वो उसकी बैक हिस्ट्री की तरफ जाएगा। और ठीक देन है. इंट्रोडक्शन,
और फिर टाइटल और एंड पे एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन जो हम नॉर्मली करते हैं वो हम लोग पहले टाइटल से शुरू करते हैं, फिर हाँ एब्स्ट्रैक्ट, फिर इंट्रोडक्शन करते हैं। हाँ लिखेंगे इसी फॉर्मेट में, लेकिन जो वहाँ पे लिखा होगा, जो नजर आएगा वो इस तरह लगेगा कि पहले हमने टाइटल को लिखा हुआ है, फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, फिर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, फिर मटेरियल्स एंड मेथड्स लिखे हुए हैं, फिर रिजल्ट्स हैं, फिर डिस्कशन है और फिर कंक्लूजन है। लेकिन हमने तरतीब के लिहाज से कौन सा पहले करना है, मटेरियल एंड मेथड को पहले फिल करना है, फिर हमने रिजल्ट्स को फिल करना है, फिर डिस्कशन को फिल करना है, फिर कंक्लूजन, फिर हमने दोबारा ऊपर इंट्रोडक्शन की तरफ आना है, फिर टाइटल ऊपर लिखना है और फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखना है। मीन्स कि हमने जो काम करने के हिसाब से है वो डिफरेंट है, लेकिन पेपर पे राइटअप में डिफरेंट नजर आएगा सबको। सर इसका मतलब जब हम सारा कुछ लिख के फिर हम अपना टाइटल सिलेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। पहले लोग इस तरह करते हैं, लाइक प्लीज पूरी क्लास ये समझ लें कि पहले हम जब रिसर्च करते होते हैं ना, तो एक टेंटेटिव सा टाइटल हम रख देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि हमने इसी फील्ड के अंदर रहना है। ठीक है, लाइक मैं कह देता हूं कि लाइक लाइक आइसोलेशन या एम्प्लीफिकेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ इंसुलिन जीन फ्रॉम द पॉपुलेशन इन पंजाब। ठीक है, सो मैं ये लिख देता हूँ, बाद में मुझे पता चलता है कि लाइक यहाँ से मैंने सिर्फ कोई स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप लिया हुआ है, तो मैं उसको उस तरह मॉडिफाई कर लूंगा, या किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल से मैंने ब्लड सैंपल लिए हुए हैं तो मैं उसकी तरह फिर मॉडिफाई कर लूंगा। लाइक पहले मैंने एक जेनेरिक सा टाइटल रखना है, मीन्स कि एक जनरल सा टाइटल रखना है, फिर उसको बाद में मॉडिफाई करूंगा अकॉर्डिंग टू माय रिजल्ट्स, अकॉर्डिंग टू माय डेटा। मैं जिस तरह डेटा लेता जा रहा हूँ तो उस तरह मैं करूंगा। लाइक मैं पहले समझ रहा हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान से डेटा ले लूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक सूबे से डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, तो मुझे अपने टाइटल को फिर स्क्वीज करना है दोबारा। ठीक है, सो मैं अब लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि लाइक आप में से कोई लाइक आप सब सारे समझ लें कि फॉर इंस्टेंस आप लोग रिसर्च करना चाह रहे हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे, तो सबसे पहले क्या होगा, लाइक आप चाह रहे हैं कि हम ये देख लें कि पंजाब में कोरोना वायरस के केसेस देख लें कि कितने माइल्ड हैं, कितने सिवियर हैं और कितने जो है वो लाइक नॉन सिम्टमेटिक हैं। ठीक है, सो हम ये समझते हैं कि लाइक पहले हमने क्या करना है, मटेरियल्स एंड मेथड्स डिजाइन करने हैं, वो लिखने हैं। ठीक है, कि आई कलेक्टेड इतने इतने सैंपल्स फ्रॉम दिस हॉस्पिटल, फ्रॉम दैट हॉस्पिटल, इतने इतने हॉस्पिटल से मैंने डेटा कलेक्ट किया, मेल एंड फीमेल्स का, और फिर एज भी नोट किया। फिर उसमें मैंने देखे कि उसमें सिम्टम्स है नहीं है, कोई स्पेसिफिक मार्कर मैंने यूज किया। कोरोना वायरस के लिए मैंने पीसीआर लगाया, पीसीआर पॉजिटिव थे, तो पीसीआर पॉजिटिव में देखा कि सिम्टम्स कौन से ज्यादा है, किसमें कम सिवियरिटी कम है, जो माइल्ड और जो सिवियर है। अच्छा, फिर मैंने देखा कि एज ग्रुपिंग मैंने कर ली कि किस एज में ज्यादा है, कुछ किस एज में कम है। सो वो सारा कुछ जो है वो मटेरियल्स एंड मेथड्स में मैं लिख दूंगा कि किस तरीके से मैंने किया है सारा डेटा किस तरह कलेक्ट किया हुआ है, कहाँ कहाँ से मैंने कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर मेरे पास जो रिजल्ट आते हैं, मैं वो रिजल्ट के सेक्शन में मैं अपने रिजल्ट लिख लूंगा। फिर उसके बाद उन रिजल्ट को मैं देखूंगा कि लाइक मैं कहता हूं कि जो सेवेरिटी है पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, मेल में लाइक 40 एज से ज्यादा के एज के लोग हैं या 60 एज के ज्यादा लोग हैं, वो ज्यादा सिवियर हैं। सो मैं कहूंगा कि WHO जो है वो उसकी भी रिकमेंडेशन यही है, और जो प्रीवियसली हिस्ट्री है वो भी यही है कि लाइक सेवेरिटी जो है वो उसमें ज्यादा है, ओल्डर एज में ज्यादा है। सो वो मेरे इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा, वहां पे मैं थोड़ा सा उसकी ब्रीफ हिस्ट्री दे दूंगा। ठीक है, किस किस कंट्री में कोरोना ज्यादा है वो मैं लिख लूंगा, पाकिस्तान में स्टेटस कोरोना का क्या है वो लिख लूंगा, और डिस्कशन में मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास जो रिजल्ट आए हुए हैं वो थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, और जो प्रीवियसली लोगों ने बताया हुआ है उसके साथ मैं रिलेट कर दूंगा। ठीक है, तो प्रीवियस स्टडीज के साथ मैं रिलेट कर दूंगा कि मेरी स्टडी जो है वो प्रीवियस स्टडी को नेगेट कर रही है, लाइक और इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रीवियस स्टडीज। उसके बाद जब इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद मैं उसके लिए कोई सुटेबल टाइटल देखूंगा कि उसके प्रिसाइज कोई टाइटल आ जाए। ठीक है, और उस टाइटल के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं पूरे अपने रिजल्ट देखूंगा, डिस्कशन मेरे जहन में होगा, और उन डिस्कशन में से उस रिजल्ट्स में से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाल के मैं एज एब्स्ट्रैक्ट वो यूज कर लूंगा। समझ आ रही है? यस सर। यस सर।
So that's nice. That's nice. Okay, so I think it's not like more difficult. It's easy actually. Okay, and एक बात याद रखें कि don't wait for your studies to be finished to start writing. Start writing from the day you get results. जैसे ही आपके रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, यू आर डूइंग वर्क, उसके साथ साथ आप काम करना शुरू करें, क्योंकि मटेरियल्स एंड मेथड्स आप ये वाला सेक्शन जो है ये आप साथ साथ करेंगे। रिजल्ट जो जो रिजल्ट्स आपके साथ आ रहे हैं आप रिजल्ट्स ऐड करते जाएं, ठीक है। सो डोंट वेट फॉर लाइक योर स्टडीज टू बी फिनिश्ड। इस तरह ना करें कि आपका आपका सारा काम खत्म हो जाए और फिर राइट अप करें, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे, अगर आप एंड पे राइट अप करेंगे, यू विल मिस अ पावरफुल टूल, एंड दैट टूल इज लाइक रिसर्च इज इटरेटिव। रिसर्च जो है वो क्या है, एक आपने एक काम करना है, ठीक है, उसको फिर आपने एसेस करना है कि आइदर इट इज राइट और नॉट, आइदर यू नीड टू री-वेरीफाई दैट और नॉट। सो यू हैव टू असेस दैट and then you need to redo that job, that work. Like आपने एक डेटा ले लिया है और उस डेटा में लाइक आप समझ रहे हैं कि आपने नंबर ऑफ सैंपल्स कम लिए हैं, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, आपने ये दोबारा करना है। आप राइट अप में आ गए, आपने अपने रिजल्ट्स देख लिए, लिख लिया है। सो आप लाइक आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया है, फिर पीसीआर लगा के आपने देखा है कि लाइक पीसीआर आपका सही नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या थी, जो डीएनए आपने आइसोलेट किए, दैट इज नॉट मोर लाइक दैट इज नॉट लाइक वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। सो आप किट्स चेंज करें, आप मेथड चेंज करें और दूसरे मेथड से डीएनए आइसोलेट करें, गो थ्रू द प्रोसेस एंड यू रीडू दैट, असेस दैट एंड देन लाइक यू कंप्लीट दैट। सो लाइक सो स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ योर रिसर्च। समझ आ रही है? डोंट वेट टिल द एंड to write your paper. You got my point? Yes, sir. That's good. Yes, sir. Okay, and standards क्या है एक पेपर के? First of the standard is a stereotype format. So scientific articles are the repository of scientific observation with the recipes by which those observation can be repeated. So साइंटिफिक राइटिंग जो है, आर्टिकल्स जो है वो ये रिपोजिटरीज होते हैं साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के। आपने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर ली, means that you observe something with scientific tools, you prove that, and you like wrote an article, you published it. Now that published article is the part of the repository. Now anyone who want to like look for several observation in certain like fields, he or she will refer, and he will go and will retrieve the research articles with the recipes by which those observations can be repeated. So अब आपने ये करना है, like एक काम यूएस में हुआ है या एक काम चाइना में हुआ है, एंड यू वांट टू रिपीट दैट वर्क इन पाकिस्तान, ठीक है। अब आप ये देखना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हम देख लें कि लाइक कोई डेंगू वायरस है, वो पाकिस्तान में कितना है, लाइक किसी और कंट्री में लाइक उसकी रेशो ज़्यादा है या कम है, वो सीक्वेंस किसी और कंट्री में लाइक चाइना में कोरोना वायरस जो है लाइक वो एक स्पेसिफिक स्ट्रेन वहाँ पे मौजूद है, एंड यू वांट टू सी द स्ट्रेन इन पाकिस्तान। So what you will do, you will go, you will retrieve a paper, किसी ने काम किया हुआ चाइना में, अपने वहाँ का वायरस आइडेंटिफाई किया है, आपने बिल्कुल हूबहू वही जो रेसिपी है उसी को फॉलो करना है, पाकिस्तानी पॉपुलेशन पे अप्लाई करना है, एंड गेट द सीक्वेंस, identify the strain and compare with the Chinese one, and now you can compare both, and now you can say that like this is different and that or this is the same strain of China actually. समझ आ रही कि नहीं? Yes, Am I sir. clear? Okay. And next is the format is important. The framework is always the same. आप कोई भी रिसर्च आर्टिकल देखें, रिसर्च आर्टिकल अगर आप देखें तो सबके फॉर्मेट सेम होते हैं। आप उसमें देखेंगे कि एक स्पेसिफिक फॉर्मेट से लिखे जाते हैं। उस स्पेसिफिक फॉर्मेट का फायदा है, और उसका फायदा ये है कि हम इसमें नहीं पढ़ेंगे कि लाइक पहले किसी ने एक चीज बात कही हुई है, फिर वो बात चेंज हो रही है, फिर किसी और हेडिंग के साथ कुछ और है, लाइक हेडिंग सारे सेम होने हैं, ठीक है।
The inner content can be studied without distraction. और उसका फायदा ये होगा, like पहले टाइटल है, फिर एब्स्ट्रैक्ट है, फिर इंट्रोडक्शन है, फिर मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं, और फिर रिजल्ट्स एंड डिस्कशन है, एंड फिर कंक्लूजन है. सो आपके जहन में ऑलरेडी एक स्केच बना होगा कि ये पेपर इस फॉर्मेट के मुताबिक है. ठीक है, तो वो बंदा जो रीडर है वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पे होगा रादर देन ऑन द फॉर्मेट. तो फॉर्मेट सारे सेम होंगे, लाइक इस फॉर्मेट से होंगे: abstract, introduction, methods and method, result, discussion, conclusion, references. So this will be the common format for all research articles. Am I clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. And the precise language. The essential characteristics of scientific writing is clarity. It should be clear. Like इस तरह ना हो कि ambiguous हो, बहुत सारी चीजें वैग हो, खुद से लिखी गई हो, कुछ का साइंटिफिक प्रूफ ना हो. तो एक एक सेंटेंस जो है वो आपने बार बार देखना है, और like it should be clear. The message that the sentence is giving should be clear, must be clear. ठीक है. So this is not like normal language. This is not like normal like common language. It is scientific language. It should be clear. Every sentence must have proof. आप फॉर इंस्टेंस आप कह रहे हैं कि जो नॉर्मल एज है पाकिस्तान में वो 60 years है. So one cannot say this without any reference. You have to give the reference for this sentence, like how Pakistani population will have a medium age of like 60 years. So you have to give the reference for this sentence. आपने काम किसी और चीज पे किया हुआ, and you are making the background for your study. So introduction में आप सारा history दे रहे हैं. So you have to give the proof and reference for each of the statement or scientific statements. So it should be clear, like it should not be vague. Like I will have the base of my study. Like it should be clear, that should be clear, like enough to have a clear standing actually. And in science, description must be precise. It should be precise. Recipes must be complete. Data must be exact. And logic must be transparent. Conclusion must be cleanly stated. And that's it. So all these things should be clear, precise, exact, transparent, clean. So in this way, we can call it a scientific article, and we can follow those articles actually. And a single and the third of the standard is, so the first of the standard was a specific format, a stereotype format. The second of the standard in scientific writing is precise language, and the third one is clear direction. We have a clear direction, like where we have to go, and that direction we have to be in mind from the start of the manuscript, from the start of the article. So like single theme you have, that must be single in an article. Like if our conclusion is about temperature, so temperature should be ever present throughout the paper. So like I'm writing on temperature, and I have taken data on temperature. So temperature should be the main focus. So temperature should be in the title. The introduction should tell how predecessors wrote about the temperature, how previously people have wrote about the temperature. And the materials and methods section should detail the instruments that used and the operations that were performed involving temperature, like how we measure temperature. Like we should have to give the details of the instruments and the ways that we have measured the temperature. And the results section should include data about the temperature. So what data we have got, what results we got. So all the data should be in the results section. What we say about the results
should be in the discussion section. The results section, our own interpretation will not be in the result section. Result section में हमारे अपने interpretation नहीं होंगे. हमने just ये कहना है कि मैंने डेटा लिया, इतना जो है टेम्परेचर जो है वो दिन के वक्त इतना था, रात के वक्त इतना था, एंड ये 15 दिन का डेटा है, तो जो टेम्परेचर जो है वो लाइक स्टॉर्म्स के साथ चेंज होता रहा है, या सनलाइट जो ज़्यादा होती रही है तो द टेम्परेचर वो राइज एंड वो द टेम्परेचर वाज दिस एंड दैट. अब डिस्कशन सेक्शन में मैंने क्या लिखना है? डिस्कशन सेक्शन में मैंने उसको डिस्कस करना है, लाइक व्हाई द टेम्परेचर इन द डे लाइक वाज हाई एंड इन द नाइट वाज लो. Like what are the factors that dryness कितना contribute कर रही है temperature change में, like moisture अगर ज़्यादा है तो temperature fluctuation, we got fluctuations around. So all those things should be discussed in the discussion section. Results में सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने सिर्फ results बताने हैं कि ये मेरे पास results आ गए. I will not explain any result in my result section. I will explain my results in the discussion section, and this should be connected, should connect this data to generally accepted understanding about the temperature. So general understanding जो है वो temperature के बारे में है, मैं अपने results को general understanding के साथ में like link करूँगा in the discussion section. Please, anybody could explain this slide. Faisal is there. Faisal Talib. Faisal Talib, आवाज आ रही है आपको? Can you hear me? जी सर. जी सर. फैसल बताएं क्या था ये? जनरल सी बातें हैं, जस्ट आप, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें हमने क्या सीखा है. सर मैंने थोड़ी देर पहले ज्वाइन किया था तो मुझे प्रॉपर वो समझ नहीं. आप तो बहुत वक्त से हैं यार. चले सर आपकी एक तो आपने वो लिंक मुझे कहीं से मिला है, आपने मेल नहीं की. नहीं, मैं पहली दफा मेल मेल कर चुका हूँ ना. डे फर्स्ट पे मैं मेल कर चुका हूँ, तो मैं रोजाना तो अच्छा, मेल नहीं तो जो करूंगा. फर्स्ट वही टाइम. वही हाँ, वही लिंक काम करे. जी जी, चलें, ओके सर. ठीक है. तो हाँ ठीक है, नो वरीज नो वरीज. फैसल, अवैस इज देयर. अवैस, आपने लेट ज्वाइन किया. अवैस, चलिए. फरियाल इज देयर. फरियाल. हाँ जी सर. जी अवैस, बताएं इस स्लाइड में क्या है? सर मैंने भी थोड़ी देर पहले ही किया, 5 मिनट पहले. वो नेट नहीं आ रहा था मेरा सुबह से. ठीक है, नो वरीज. फरियाल वहीद. सर मैं करूँ एक्सप्लेन? जी आप कर दें इकरा. सर इसमें आपने बताया है कि हम लोगों ने जो भी साइंटिफिक पेपर राइट करना है उसका अगर हम लोगों ने कोई एक टॉपिक चूज किया है तो एक सिंगल थीम पर होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने उसको टेम्परेचर, उसके अंदर एक स्पेसिफिक एक सिंगल उसकी डायरेक्शन देनी है, तो उसके अंदर हम लोग उसके दूसरे फैक्टर्स को, पीएच वगैरह को ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. तो हम लोग वो टेम्परेचर का सारा जिक्र, उसका टाइटल में भी उसका नेम होना चाहिए, उसके सारा जो इंट्रोडक्शन है उसके अंदर भी टेम्परेचर के बारे में सारा होना चाहिए, मटेरियल्स एंड मेथड्स के अंदर टेक्निक्स जो यूज की हैं उनके अंदर भी कि हम लोगों ने टेम्परेचर को कैसे मेजर किया है वो सारा होना चाहिए. और जो हम लोग डाटा इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट्स के अंदर, उसके अंदर भी हम लोग टेम्परेचर को, और डिस्कशन के अंदर भी उसको सबको कनेक्ट करेंगे कि हम लोगों ने कैसे हिस्टोरिकली इसको रिलेट किया अपने रिजल्ट्स को, और उसका मतलब एक सिंगल थीम और एक सिंगल डायरेक्शन में लेके चलेंगे अपने सारे पेपर को. ग्रेट. और डिस्कशन में क्या होगा? सर डिस्कशन में भी हम लोग उसको मतलब जो डाटा होगा हमारा रिजल्ट, उसको हम लोग डिस्कशन के अंदर भी मतलब मेन उसका थीम टेम्परेचर ही रखेंगे. हाँ, और उसमें स्पेसिफिकली हम ये देखेंगे कि लाइक जो जनरली एक्सेप्टेड अंडरस्टैंडिंग है लाइक टेम्परेचर के बारे में, अगर हमारे रिजल्ट उस तरह आ रहे हैं तो हमने उसको लिंक करना है. अगर हमारे उस तरह नहीं आ रहे तो फिर हमने उस पर डिस्कस करना है कि लाइक हाउ व्हाई आवर रिजल्ट आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियसली एक्सेप्टेड अंडरस्टैंडिंग, आवर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. तो ये सारी डिस्कशन जो है, रिजल्ट पर डिस्कशन जो है वो डिस्कशन सेक्शन में होना है. ओके सर. ठीक है. सो ओके, एंड हु विल बी द नेक्स्ट टू एक्सप्लेन? कोई अदर पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर हो?
सर हमने रिजल्ट में जो हमने हमारा डाटा उसको हमने डिस्कशन में हमने उसको मतलब एक्सप्लेन करना है कि वो डाटा कैसे आया है, ये सारा कुछ। नेता ये इस तरह है ना कि हमने रिजल्ट्स में मैं फॉर इंस्टेंस मैं इस तरह करता हूँ कि मेरे पास बैरोमीटर है और मैं उस पे डेटा नोट करता हूँ कि 1 घंटे बाद मैंने डेटा लिया, सुबह फॉर इंस्टेंस सुबह 6 बजे मैंने डेटा लिया, उस पे बैरोमीटर पे इतना आ रहा था। फिर मैंने डेटा लिया 1 घंटे बाद, वो डेटा मैं नोट करूंगा। उसके 1 घंटे मीन्स हर एक घंटे बाद मैं पूरा डेटा लूंगा। फिर थर्मामीटर पे मैंने टेम्परेचर नोट किया, मेरे पास कोई और इक्विपमेंट है उस पर मैंने डेटा नोट किया। सो ये सारा कुछ मैं क्या करूंगा, मैं सारा कुछ ये मेथड्स एंड मेथड्स में लिख दूंगा। मेरे पास जो मेजरमेंट आई वो मेजरमेंट्स जो हैं वो मैं रिजल्ट्स में लिख दूंगा। ठीक है, उसमें उन रिजल्ट्स में मैं ये लिख दूंगा कि टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रही है कि नहीं, जस्ट में एनालिसिस किए होंगे। डिस्कशन में मैं क्या लिखूंगा, डिस्कशन में मैं ये लिखूंगा कि लाइक द टेम्परेचर ये वेरी क्यों कर रहा है। लाइक मेरे पास आ जाए लाइक कोई एक स्पेसिफिक इलाका है नारान, नारान में मेरे पास दिन को टेम्परेचर बहुत कम आ रहा है, ठीक है, या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन लाइक 1 घंटे बाद जो डेटा ले रहा हूँ वो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे लाहौर में मैं डेटा ले रहा हूँ ऑन द सेम टाइम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन 1 घंटे के दौरान जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है वो कम है या ज़्यादा है, ठीक है, अपोजिट है एक दूसरे के। सो मैं अब इसके लिए कोई लाइक रिजल्ट में मैं जस्ट रिजल्ट पेस्ट कर दूंगा, लाइक मैं कह दूंगा फ्लक्चुएशन इतनी है, यहाँ पे डिफरेंस इतना है, यहाँ पे इतना है, बस जस्ट। डिस्कशन में मैंने डिस्कशन उस पर करनी है कि लाइक यहाँ पे मॉइस्चर कम है, इस वजह से लाइक चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा है, या व्हाटसोएवर द रीजन इज, वो रीजनिंग जो है वो मैं डिस्कशन सेक्शन में करूंगा। ठीक है, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो उस पर डिस्कशन जो है वो लाइक उसको रिलेट करूंगा जनरल अंडरस्टैंडिंग से कि हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है इसके बारे में, आइदर ये उसको फुलफिल कर रहा है या उसको लाइक नेगेट कर रहा है। तो उस वो डिस्कशन जो है वो डिस्कशन पार्ट में होगा। जी, यू गॉट माय पॉइंट, एम आई क्लियर? यस सर। जी, वेट फॉर अ व्हाइल, वेट। ओके, we can wait for 2 minutes, 2 or 3 minutes break ले लें, फिर शुरू करते हैं, ठीक है। फरियाल माइक। फरियाल अपना माइक ऑफ कर। हेलो आवाज नहीं आ रही मेरी? यस। और दिल्ली में पे पहले तो मैं पता था दिल्ली में फरियाल आपका माइक ऑन है।
बताया कि वो लेना भी है। हाँ जी, जो घर के लोग होंगे, जाहिर सी बात है कपड़े तो पहनने हैं, तेल होंगे। अल्लाह, हाँ इसलिए मैंने वो जो कुर्ता दिखाया शादी मस्टर्ड वही पहना। जिसको आप कहते हैं नीचे बांग लगा मतलब कुछ क्या है कि बहुत गुस्सा लगी है। हाँ मैं भी कुछ गल्ला अंदर ही कर लेंगे सही है। क्योंकि यहाँ ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक का मतलब होता है ना ब्लैक नहीं यार क्या लूंगा ब्लैक करने से जेड़ा इमरान दी और पाया जे प्रोफाइल पिक्चर भी आए थे। एक मिनट रुको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सॉरी ऐसा मैं ऑफिस में फिर ऑफिस के थोड़े से काम भी होते हैं। अच्छा सो वेयर वर वी, हम कोई अगर थोड़ा सा कंक्लूड कर दें। कौन कंक्लूड करे? आफरीन, आर यू देयर? सर मैं बोलूं? जी जी मतलब सर सबसे पहले हमने एक ऑब्जर्वेशन बनाई, उसके ऊपर हम लोग का पेपर लिख रहे हैं एक रेसिपी को फॉलो करते हुए, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने उसका फॉर्मेट चेक किया कि फॉर्मेट किस तरह से होना चाहिए, ठीक है, जो कि एक स्टैंडर्ड है, उसी को हम फॉलो करते हैं। उसके बाद उसकी प्रिसाइज लैंग्वेज होनी चाहिए कि जो हम लिख रहे हैं वो रीडर को समझ आना चाहिए। और थर्ड पे हमने देखा है कि उसकी डायरेक्शन के अगर हम लोग कोई एक टॉपिक रख रहे हैं तो उसको हम लोग उसी को लेकर चलें। उसका नाम होना चाहिए टाइटल में, प्रोसीजर में और मटेरियल मेथड्स में। और उसके बाद हम लोगों ने रिजल्ट बनाना है और रिजल्ट को हमने प्रिसाइज और ब्रीफ रखना है, और जो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हमने डिस्कशन में सारी बतानी है। सही सही, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सो going to the next is reviewed and make available. so ये थर्ड स्टैंडर्ड है
and that is reviewed and made available to others. So आपने हमने एक पेपर लिख लिया है, रिसर्च कर ली है, उसके बाद एक पेपर लिख लिया है, सो उसके दो रिक्वायरमेंट अब हैं. फर्स्ट इज जो कुछ हमने पब्लिश किया हुआ है वो दूसरे लोगों को एक्सेसिबल हो, एक्सेस हो उनको, ठीक है, वो एक्सेसिबल हो. एंड सेकंड रिव्यूड हो. रिव्यू का क्या मतलब होगा कि मैंने एक काम किया हुआ है, तो आप लोग भी रिसर्चर हैं और आप लोग अपने फील्ड में काम कर रहे हैं. मैंने एक पेपर को पब्लिश करना है, तो मैं जर्नल को भेजूंगा, जर्नल वालों ने क्या करना है वो आपको भेजना है. मुझे शायद उसका पता ना हो कि किसके पास गया हुआ है रिव्यू के लिए. सो पीयर रिव्यू कहते हैं. हम अक्सर जो साइंटिस्ट हैं या सेम लेवल के साइंटिस्ट हैं उनके पास पेपर चला जाता है, फिर उसने वहाँ उसको रिव्यू करना है और उसको वेट करना है कि आइदर इट इज़ ओके और नॉट. अगर वो वहाँ पे कमेंट देता है कि ये जो है ये ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने डेटा लिया हुआ है लाहौर का. लाहौर में मैंने देखा हुआ है कि ट्रांसजेंडर्स कितने हैं, ठीक है. तो ट्रांसजेंडर पे मैंने डेटा लिया हुआ है और मैं ट्रांसजेंडर पॉपुलेशन में मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितने एजुकेटेड हैं कितने अनएजुकेटेड हैं. मैं ये डेटा ले लूँ और मैंने टाइटल रखा हुआ है द स्टेटस ऑफ ट्रांसजेंडर्स इन पाकिस्तान. अब ये तो मैंने लिख लिया, सारा कुछ लिख लिया, मैं जर्नल को भेज देता हूँ, जर्नल का एडिटर देख लेता है, वो बहुत खुश होता है कि चले डेटा पाकिस्तान से आ गया एंड दैट्स गुड. और सारा इतना सारा डेटा लिया हुआ है. उसने फिर क्या करना है, उसने एक थर्ड पर्सन को भेजना है, दो बंदों को भेजना है. और उन्होंने क्या करना है एंड they will have to go through the manuscript, go through the paper, and they will now evaluate the paper. सबसे पहले मैंने टाइटल में लिखा था पाकिस्तान. So somebody will object that this data is only from Lahore. How can I write Pakistan in the name? So I should be more precise. Instead of writing Pakistan, I should write Lahore, comma Pakistan. ठीक है. So इस तरह के questions कोई कह सकता है कि आपने सिर्फ एक लोकेशन से, एक जगह से, एक बाजार से डेटा लिया था, बाकी आपने स्किप किए हैं. So go and take random sampling from other locations as well. ठीक है. So वो जो है वो क्वेश्चन जब रेज होंगे मैं उनको आंसर करूंगा, फिर वो जाके पब्लिश होगा. समझ आ रही है? So जब पब्लिश हो जाए तो वो लोगों को एक्सेस हो. पहले फॉर इंस्टेंस कोई नेट पे देखे तो वो पेपर निकल आए, इस तरह ना हो कि वो पेपर वहां पे एक्सेसिबल ही ना हो. ठीक है. So a scientific paper should be accessible to others. And scientific journals are the traditional mechanisms for have the traditional mechanisms for reviewing, disseminating, and preserving scientific papers. So submit your paper to a peer-reviewed journal. So peer-reviewed journal जो है उसमें अपने पेपर जमा करवाएं, सबमिट करें, ताकि वो peer review हो जाए. ठीक है. उसको कोई एक्सपर्ट जो है वो देख लें और फिर उस पे कमेंट्स आ जाए, तो पीयर रिव्यू जर्नल्स होते हैं, सिर्फ उसमें पब्लिश करें. ठीक है. एंड हैविंग एन आर्टिकल रिव्यूड बाय एक्सपर्ट, अब ये क्या इंश्योर करता है? इंश्योर्स दैट it can be understood and used by a broad scientific community. Now, if the paper is reviewed by experts and they accept the manuscript, so that will mean now scientific community can understand and can use that use your article. And second point is preserving it in the public forum or database ensures that scientific community will have the opportunity to use it. ये डेटाबेस में या पब्लिक फोरम पे अब ये डेटा पब्लिश हो गया है, तो वहां से कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी एनीबॉडी कैन रीड, एक्सेस एंड यूज द डेटा. एम आई क्लियर? यस सर. कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? हिजाब इज देयर. हिजाब, हिजाब सरफराज. जी हिजाब बताएं.
आमना नकवी, आमना यस सर। जी बताएं, ये इस स्लाइड पे क्या पढ़ा है हमने? जी सर, ये थर्ड स्टैंडर्ड है और इसमें ये है कि ये हमने पढ़ा है कि रिव्यूड एंड मेड अवेलेबल टू अदर, मतलब कि जो साइंटिफिक पेपर है वो एक्सेसिबल होना चाहिए दूसरों के लिए। जैसे कि अगर हम डाटा कलेक्ट करते हैं ट्रांसजेंडर का, ठीक है, तो हम ट्रांसजेंडर पाकिस्तान के अंदर कलेक्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की किस सिटी में हमने उनका डाटा कलेक्ट किया है वो हम बताएंगे, ठीक है। और इसमें हमारा प्री रिव्यूड जर्नल होगा, ठीक है, जिसमें हम पेपर सबमिट करेंगे, ठीक है। और रिव्यूड बाय द एक्सपर्ट्स हमारा पेपर सबमिट होगा, जिसमें हम साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो अंडर यूज्ड होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे। ये हमने सर। अच्छा अच्छा, पेयर रिव्यू से क्या मतलब होगा? सर जो हमारा साइंटिफिक पेपर है ना, हम्म, वो ट्रेडिशनल साइंटिफिक जो हम रिव्यू करेंगे ना साइंटिफिक पेपर को, वो सबमिट होगा प्री रिव्यूड जर्नल के ऊपर, आई गेस। ओके, अगर मैं इसको इस तरह बता दूं, लाइक ओके, सो अगर मेरे पास एक आर्टिकल है और मैं लाइक एक मिनट, ओके, अगर मेरे पास एक पेपर है, लाइक आर्टिकल है, आई रोट एन आर्टिकल एंड what I will do, I will submit that article to some journal, ठीक है, ये मैं जर्नल को सबमिट करूंगा, ठीक है। And after submitting that to the journal, what the journal will do, the journal editor will assign, like journal editor ने क्या करना है, दो peer reviewers हैं, उनको लाइक दो साइंटिस्ट होंगे, उनको ये reviewer 1 and this will be reviewer 2। सो ये दो रिव्यूअर्स होंगे। जर्नल एडिटर ने क्या करना है, इस आर्टिकल को पहले खुद देखना है कि आइदर इट इज ओके और नॉट, इफ इट इज राइट then the editor will send this article to two different persons, and if they they review the article, they will submit the report to the journal, they will submit the report to the journal, and the journal will now report to the author of the manuscript, either the paper should be accepted or not। इसमें ये भी हो सकता है कि ये रिव्यूवर्स कहें कि ये पेपर ठीक नहीं है तो वापस कर दो, इसको पब्लिश नहीं होना चाहिए, or they will have certain comments like it should be like this and that type, or this should have some more data included, and the journal will ask the author to include some more data, to take some more stringent values, stringent like procedures to evaluate data। ठीक है, अब इस प्रोसीजर की समझ आ गई है, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज peer review process। इस होल प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, peer review सर process। और इस तरह के जर्नल को हम क्या कहेंगे, peer reviewed journals। ठीक है, सर अब सर जी 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 बताएं। सर अगर हम जर्नल को सर रिव्यू कर, आपने तो सर अगर एक रिव्यूअर को सही लगता है और एक रिव्यूअर को सही नहीं लगता, फिर क्या होगा सर? सो फिर तो पीयर रिव्यू नहीं होगा, राइट? तो राइट, पब्लिश नहीं होगा। देयर आर एडिटर्स हियर, यहाँ पे एडिटर मौजूद होगा, जर्नल का एडिटर होता है। सो एडिटोरियल बोर्ड या एडिटर डिसाइड करेगा कि रिव्यूअर के कमेंट को इंडोर्स करना चाहिए, या फिर कुछ केसेस में ये होता है एक एक एक्सेप्ट करता है, दूसरा कहता है कि इसको रिजेक्ट होना चाहिए। सो इट विल सेंड टू अ थर्ड रिव्यूअर। अगर कंफ्यूजन है तो एक थर्ड रिव्यूअर के पास ये भेज देगा,
and this will be reviewer 3. So इस third reviewer से राय लेगा कि वो इसके बारे में क्या कहता है, and after that if the third accept or not, so that will be the discretion of these editors. The editor will decide what to do next. Am I clear? Yes, sir. Thank you, sir. यहाँ पे एक बेसिक चीज समझ लें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पीयर रिव्यू जर्नल एंड अ मैगजीन. आपने देखा होगा ना, हमारे पास देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ मैगजीन्स अवेलेबल, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स. ठीक है, सो मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर दे आर नॉट पीयर रिव्यूड. ये पीयर रिव्यू नहीं होते हैं, बिकॉज ये पीयर रिव्यू नहीं होते तो इसको साइंटिफिक प्रूफ के लिए एज सच यूज नहीं किया जा सकता. इसको एज अ साइड लाइक कमेंट यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको एज अ प्रूफ यूज नहीं किया जा सकता. ठीक है, क्योंकि ये रिव्यू नहीं हुए होते. लाइक इफ यू वांट टू राइट एन आर्टिकल ऑन ओजोन, ठीक है, तो आप इफ यू वांट टू पब्लिश दैट इन अ मैगजीन, तो मैगजीन में आप वो रिव्यूअर्स के पास नहीं जाएगा. लाइक द मैगजीन्स और द न्यूज़पेपर दे विल स्किप दिस स्टेप. उसमें ये स्टेप नहीं होंगे. ठीक है, वो जस्ट आपने न्यूज़पेपर को भेजना है और उसने डायरेक्ट पब्लिश कर देना है नेसेसरी चेंजेस करके. लेकिन अगर पीयर रिव्यू जर्नल में आप भेज रहे हैं, so the peer review journal must have to send that to the scientists. They will check the authenticity of the data, and then the process will complete, and then it can be published. That we will be talking about the detailed process later on actually. Okay, am I clear? So there is a difference between reviewed and peer reviewed and non peer reviewed publications. ठीक है, so authentic are peer reviewed articles. वो ये समझ लें कि जर्नल आर्टिकल और न्यूज़पेपर आर्टिकल में फ़र्क क्या था. आई डोंट वांट टू राइट इन डिटेल, लाइक पिछली क्लास में हम काफ़ी डिटेल से बात कर चुके थे. उसमें यह है कि हमने क्या करना है, हम एक पेपर लिखते हैं, आर्टिकल बंदे के पास कौन से 2 एक्सपर्ट्स के पास इसको भेज रहे हैं. वो किसी भी 2 एक्सपर्ट्स के पास वो हमारा पेपर जो है वो भेज देंगे. उसके बाद उन एक्सपर्ट्स ने उस पेपर को पढ़ना है, रीड करना है, और उसके बाद अपने एवेलुएट करके उसको अपने कमेंट्स दे देने हैं. वो कमेंट्स जो हैं वो एडिटर के पास आ जाएंगे, जर्नल के एडिटर के पास. एडिटर ने वो कमेंट्स पढ़ने हैं और डिसाइड करना है कि इस पेपर को रिजेक्ट किया जाए, इस पेपर को ऑथर के पास भेजा जाए और कहा जाए कि इस पे मेजर रिवीजन कर लो. मीन के जो रिव्यूअर्स ने या जो एक्सपर्ट्स ने बातें कही हुई हैं उसको एड्रेस कर लो, उसमें एक्सपेरिमेंट्स लगा दो या जो भी उन्होंने कहा हुआ है, या कोई माइनर सी करेक्शंस हैं इंग्लिश के या थोड़े से इधर उधर के करेक्शंस हैं वो कर लें. तो उसने ऑथर्स को भेजना है. अब ऑथर्स को नहीं पता कि ये किन एक्सपर्ट्स के पास गया हुआ है. कुछ जर्नल्स, अच्छा, अगर ऑथर को नहीं पता कि किन एक्सपर्ट्स के पास गया हुआ है और एक्सपर्ट्स को पता है कि किस ऑथर का ये पेपर है, ठीक है, चुके हैं ना. क्लास फैसल हम ये डिस्कस कर चुके हैं. जी सर, कर लिया था लास्ट क्लास में हमने. हाँ, अच्छा, एग्जैक्टली. तो सिंगल ब्लाइंड रिव्यू, डबल ब्लाइंड रिव्यू भी होते हैं. सो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक review process. Okay, that's good. Kiya tha Maida. Okay, and so we should proceed further without wasting our time. So if you are writing a paper and so write with exactness and clarity. So for exactness and clarity, what you need to do is write straightforward message. Straightforward message likhe. Your medium is not the message. आप जिस medium में लिख रहे हैं, like इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश आपका मैसेज नहीं होना चाहिए. मींस के इंग्लिश को आप सिंपल रखें ताकि आपका मैसेज क्लियर हो.
आपका फोकस मैसेज पे हो, इंग्लिश ना हो। मीन्स के जो मतलब है जो रीडर पढ़ रहा हो ना, आपने इतनी गलतियां की हुई हो उसमें या इतनी मुश्किल लैंग्वेज यूज किया हो कि वो रीडर जो है वो इंग्लिश में ही फंस जाए। ठीक है, सो ट्राई टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन योर मैसेज। आप क्लियर मैसेज लिखें ताकि मैसेज क्लियर हो। आपका जो मीडियम है, मीडियम ऑब्स्टिकल नहीं, आपने अपने सर मैसेज आपकी को आवाज प्रिसाइज करना, बहुत कीप द मीडियम। हो रही है, डिस्कनेक्ट हो रहा है शायद। ओके, अभी ठीक है? इट शुड लाइक ओके, सबके साथ यही हो रहा है, मेरी लाइक डिस्कनेक्ट हो रहा है। यस सर। ओके ओके, शायद अभी ठीक हो जाए। ओके, सो व्हाइल राइटिंग मेक द मैसेज प्रिसाइज। ओके, सो अच्छा, राइटिंग के दौरान अपने मैसेज को आपने बहुत प्रिसाइज करना है। अपने मीडियम, जिस मीडियम में आप लिख रहे हैं वो मीडियम आपका लाइक दैट शुड नॉट अट्रैक्ट अटेंशन। मींस कि मीडियम आपने सिंपल रखा हुआ होगा ना, लाइक इंग्लिश आपने बहुत सिंपल लिखी हुई होगी, सो मैसेज पे फोकस होगा। लेकिन आपने इंग्लिश को कॉम्प्लिकेट किया होगा तो मैसेज आपका क्लियर नहीं होगा। सो ट्राई टू मेक योर मैसेज क्लियर। एंड नेक्स्ट इज से व्हाट यू वांट, व्हाट यू मीन डायरेक्टली। आप जो भी कहना चाह रहे हैं लाइक लिखने में, सो वो डायरेक्टली कहें। लाइक इट में देयरफॉर, ये एग्जांपल्स हैं, ये रेड कलर में दिए हुए एग्जांपल्स, ये लाइक इस तरह ना लिखें। इट में देयरफॉर नॉट बी अनएक्सपेक्टेड दैट, ये लिखा हुआ है ना, इट में देयरफॉर नॉट बी अनएक्सपेक्टेड दैट, इसको सिंपल लिखें। द रिजल्ट सजेस्ट, वही मतलब इसका भी आ रहा है। इसके बाद देखें, एन एफर्ट वाज मेड टू, सो सिंपल लिखें इसको, वी ट्राई टू। अब ये पूरा सेंटेंस से थर्ड जो है, दिस जीन इज ऑफ सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग कॉमनैलिटीज इन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म ए एंड बी। का कोई मतलब नहीं आ रहा इस सेंटेंस का। अगर हम इसको इस तरह लिखें, a single mutation in this gene of microorganism A has brought about its new use in microorganism B. So this will be more simple, more easy and easy to go. समझ आ गई कि नहीं? अभी सर आ गई। हाँ, कोई असल में कोई एक्सप्लेन कर दे ताकि जिनको लाइक ये डिस्टॉर्शन की वजह से अगर समझ नहीं आए तो वो भी क्लियर हो जाए। कोई भी एक्सप्लेन कर दे प्लीज। सर आपने ये बताया कि हम लोग जब भी कोई पेपर लिख रहे होते हैं, जो भी, तो हम लोग जो भी अंदर वर्डिंग यूज करते हैं वो सिंपल होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए, मतलब टू द पॉइंट होनी चाहिए। वो ज्यादा डिफिकल्ट वर्डिंग नहीं होनी चाहिए ताकि जो रीडर है उसको आसानी हो पढ़ने में। और दूसरा ये कि जो भी हम लोग मतलब लिख रहे हैं वो ज्यादातर हमें एक्टिव वॉइस में बेसिकली लिखना चाहिए, क्योंकि पैसिव वो मुश्किल हो जाता है। तो हमें इजी वर्डिंग यूज करनी चाहिए ताकि हम लोग टू द पॉइंट रहे और प्रिसाइज रहे हमारा मैसेज। हाँ, और नीचे फिर एग्जांपल्स भी हैं, जो एग्जांपल दिए हुए हैं ना। सो दिस इज हाउ वी कैन मेक इट सिंपल, इजी टू यूज, टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट विद, ओके, सो flowing style and balanced wording are appreciated, but the essence of the scientific style is clarity and precision. Clear हो and precise हो। ठीक है, एग्जाम्पल्स अब इन्होंने दिए हुए हैं कि एग्जाम्पल क्लैरिटी किस तरह आएगी, मींस कि क्लैरिटी और प्रिसीजन किस तरह होगी। ट्राई टू डिफाइन critical adjectives as numbers. Like scientific writing is different. Like आप ये नहीं कह सकते कि he is a handsome guy. This is not a scientific like term. It's dark. So dark is not a scientific term. ये हम normal English में कह सकते हैं, normal language में कह सकते हैं, लेकिन ये scientific term नहीं है. It's blue sky today.
सो ये साइंटिफिक टर्म नहीं है। इसको हम साइंटिफिक टर्म किस तरह बनाएंगे? ट्राई टू डिफाइन क्रिटिकल एडजेक्टिव्स। ये जो एडजेक्टिव्स हम यूज कर रहे हैं उसको उनको आपने नंबर्स में डिफाइन करना है, ठीक है? लाइक टॉल शुड बी ग्रेटर देन 2 मीटर, हमने खुद डिफाइन करना है। अगर मैं कह रहा हूँ ही इज टॉल, ही इज अ टॉल गाय, तो टॉल के साथ मैं डिफाइन करूंगा कि व्हाट आई मीन बाय टॉल। लाइक आई विल डिफाइन इट लाइक मोर देन 2 मीटर। लाइकवाइज हैवी शुड बी ग्रेटर देन 10 kg, मैं डिफाइन करूंगा हैवी को, ठीक है? उसके बाद मैं कैटेगराइज करूंगा कि हैवी है, मीडियम है या लाइट है, ठीक है? Tell us whether brief means less than a second or less than a millisecond. So brief for a brief period of time. So brief को define होना चाहिए scientific essence में, scientific language में, ठीक है? So जितने भी adjectives हैं उनको हमने numbers में define करना है, ठीक है? So in that way this will become scientific. Like हम ये नहीं कह सकते this is blue sky, so blue sky या or dark color, so dark को मैंने define करना है, कोई terms में define करना है। अगर मैं tall को कहूँ तो tall को मैंने define करना है कि what I mean by tall। अगर मैं कहता हूँ कि disease severity, like the disease was severe, so severe को मैं define करूंगा कि ये symptoms होंगे, तो इससे ज्यादा symptom होंगे तो मैं वेयर में डालूंगा, इससे कम मैं और इससे कम होंगे तो मैं मीडियम में डालूंगा, और इतने होंगे तो ये सिम्टम्स होंगे तो ये मैं माइल्ड में डालूंगा, ठीक है? अगर सिम्टम नहीं आ रहे तो मैं नॉन सिम्टोमेटिक कहूंगा। सो मैंने असल में उसको डिफाइन, अपने एडजेक्टिव्स को डिफाइन करना है। सो साइंस मींस योर एडजेक्टिव्स शुड बी डिफाइंड इन नंबर्स एक्चुअली, ठीक है? एंड सेकंड, अब ये देखें, ये एक और एग्जांपल दिया हुआ है कि इवन द इनहेरिटली subjective adjectives like painful, quantifying how painful is now done in most hospitals. So ये देखें ऊपर जो डायग्राम दिखाया गया है, सो हॉस्पिटल्स में भी इसी तरह के ये लाइक हाउ पेनफुल, नो पेन, जीरो, फिर माइल्ड पेन, तो ये मॉडरेट, सिवियर, वर्स्ट, पेन। सो ये असल में इसने ग्रेडिंग की हुई है। आपको यहाँ पे देखें, नो हर्ट, हर्ट बट लिटिल, ठीक है? हर्ट लिटिल मोर, सो ग्रेडिंग की हुई है 0, 2, 4, 6, 8, 10, हर्ट इवन मोर, हर्ट्स होल अ लॉट, होल लॉट, हर्ट्स वर्स्ट, ठीक है? सो यहाँ पे फिर उन्होंने लाइक टीयर्स भी दिखाए हैं, यहाँ पे लाइक डिफरेंट सिंबल से उनको डिफाइन किया है। सो लाइक ये नहीं करे कि इट हर्ट्स, तो हर्ट्स कोई नहीं है फिर, ठीक है? तो हर्ट को डिफाइन किया है कि हाउ इट हर्ट्स, हाउ मच इट हर्ट्स, ठीक है? समझ आ रही? इज इट क्लियर? कोई एक्सप्लेन कर देगा? For others, अगर if there is a distortion on my side, please if somebody could explain the slide. सर हमारा जो सा पेपर है जो हम कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी और प्रिसीजन को हमने मेंटेन रखना है। अगर हम किसी एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग नंबर में डिफाइन करें, कि जैसे कि अगर कोई किसी की हाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसकी टॉलनेस को बता रहे हैं, तो उसको हम लोग बताएं कि कितना टॉल है, जैसे कि इसमें बताया हुआ है 2 मिलीमीटर, 2 मीटर। और अगर इसी तरह से किसी वेट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको भी नंबर में शो करें। और इसके अलावा कोई सब्जेक्टिव्स हैं तो उनको भी हम लोग ग्रेडिंग देकर तो नंबर्स में शो करेंगे। जैसे ये ऊपर टेबल में डायग्राम में दिखाया हुआ है कि पेन को उन्होंने किस तरह से ग्रेड्स देकर तो डिफाइन किया हुआ है। एग्जैक्टली। और नीचे जो इमोजीज हैं उससे डिफाइन किया हुआ है कि हाउ इट हर्ट्स, लाइक हम इसको हमने खुद डिफाइन करना है। लाइक इन साइंस एवरीथिंग शुड बी लाइक दिस, शुड नॉट बी लाइक सिंपल एडजेक्टिव, इट शुड बी डिफाइंड इन नंबर्स एक्चुअली, ठीक है? ठीक है, समझ आ गई? सो नॉर्मल इंग्लिश और इसमें फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में फर्क है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू। इज इट क्लियर? शुड आई गो फर्दर? यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी प्लीज। सर ये जब हम पेपर लिखते हैं तो उसमें ये तो अलग बातें आ जाती है ना कि आपने इस तरह प्रिसाइज लिखना है ये वो, लेकिन स्टाइलिंग का कोई इफेक्ट होता है इस पे? जैसे आप कौन सा फॉन्ट अपनी मर्जी से यूज कर ले, आपको वो अच्छा लग रहा है, इस देखने से अच्छा लग रहा है, तो मतलब स्टाइलिंग का इफेक्ट होता है पेपर पे? हाँ वो ये असल कलर में यूज कर लें या फिर ये असल, हाँ वो इस तरह नहीं, ये जो राइटिंग फॉन्ट साइज और ये सारी चीजें हैं
लाइक जर्नल सबमिट करते हैं जर्नल को, तो जर्नल ने कुछ चीजें दी हुई होती हैं, लाइक जर्नल वाले कहते होते हैं कि आपने 12 फॉन्ट साइज रखना है फॉर द नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। हेडिंग के अलावा जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो 12 फॉन्ट साइज हो, टाइम्स न्यू रोमन हो थ्रू आउट, ठीक है, लाइन स्पेसिंग कितनी हो, वो सारे वो दे रहे होते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो ऑथर पे डिपेंड कर रहा होता है कि लाइक एक डायग्राम है, कलर्स कॉम्बिनेशन क्या हो, लाइक हाउ रिप्रेजेंटेशन क्या हो चीजों की, सो दैट solely डिपेंड्स ऑन द ऑथर्स। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। नो वरीज, ठीक है। सो सर जी जी बताएं प्लीज। सर अगर फॉर एग्जांपल मैं एक रिव्यू आर्टिकल लिख रही हूँ, उसमें मेरा डेटा ऐसा है कि जिसमें नंबर्स ही नहीं है बिल्कुल भी, तो सर फिर उसमें तो नंबर्स है ही नहीं, तो उसका मतलब है कि मेरा जो आर्टिकल है उसमें दैट इज लेस प्रिसाइज, नहीं नहीं, या उसका लाइक कंटेंट नहीं देखा नहीं, जाएगा? उसको उसको प्रिसाइज के कैटेगरी में नहीं लेकर आएंगे। मैं यहाँ पे ये मतलब है कि हमने इस तरह के एडजेक्टिव वेग बातें नहीं लिखनी। लाइक अगर मैं लिखूंगा ना, लाइक मैं फॉर इंस्टेंस कोई चीज लिखूंगा तो उसके साथ डिजिट्स हो, लाइक कुछ पेपर्स होते हैं कि उसमें डिजिट्स नहीं होते, लाइक कोई रिव्यू आर्टिकल है और जी उसमें सर। लिखा होता है, हाँ, तो जरूरी नहीं है कि उसमें डिजिट्स हो, ठीक है। लेकिन ये वो बातें हैं जो फॉर इंस्टेंस हमारे पास आए तो हमने वेग नहीं लिखना कि ही इज टू टॉल, ठीक है। सो ओके ओके, टॉल को फिर मैंने एक्सप्लेन मतलब करना आप इस कह तरह रहे हैं की कि टू चीजें। द पॉइंट हाँ बात करनी है कि टॉल का मतलब कैसे है कि 2 मीटर से एग्जैक्टली ज्यादा, या हाँ, एग्जैक्ट बात अच्छा करनी अच्छा, है इसका फिर? हाँ, इसका फॉर इंस्टेंस ये ह्यूमन की अगर बात हो रही है तो टॉल अगर लाइक लाइक कोई भी चाइनीज में जाएं या यूएस में जाएं, पाकिस्तान आ जाएं, कोई भी कंट्री में जाएं, तो टॉल के डेफिनेशन डिफरेंट होते हैं। इवन हमारी सोसाइटी में कुछ फैमिलीज में टॉल इज समथिंग एल्स और लाइक ड्वार्फ इज समथिंग एल्स, लाइक डिफरेंट होते हैं। सो आप कोरिया जाएं तो टॉल इज समथिंग डिफरेंट, लाइक साइज डिफरेंट है। कलर भी इसी तरह, हम किसी एक कलर को फेयर कहेंगे, वही फेयर कलर जो है किसी और कंट्री में डिफरेंट होगा, ठीक है। सो देयरफॉर वी नीड टू डिफाइन थिंग्स, हमने इसको डिफाइन करना है चीजों को, ठीक है। सो ओके सर। वेट के हिसाब, हाँ ठीक है, चले। ओके, एंड नेक्स्ट इज a smooth flowing style and balanced wording are appreciated, but the okay ये हो गया था। okay, so first of all numbers game जो है, like we need to like write things in numbers. Second, we need objective words. Whether any particular sentence is precise and objective depends on the ability to define all its components. For example, the needle vibrated continuously. So मैं ये लिख रहा हूँ कि the needle vibrated continuously. So ये मैं एक vague word लिख रहा हूँ। अब ये अगर मैं कोई स्टोरी लिख रहा हूँ, नॉन साइंटिफिक स्टोरी है और ये लाइक क्लासिकल स्टोरी है और इंग्लिश लिटरेचर या कोई भी दूसरे लिटरेचर का की स्टोरी है, सो वहां पे ये चल जाता है, ठीक है, वहां पे दिस हैज मीनिंग। But scientific word में scientific word in the scientific word, this should be this is appropriate in scientific paper if the reader is led to understand exactly which needle, what manner of vibration, and over what time period it vibrated continuously. Like ये मैंने फिर डिफाइन करने हैं कि नीडल, which needle is it, like असल में साइंस में इशू ये आता है कि वही काम अगर वो रिपीट हो सके, लाइक कोई और उसी काम को रिपीट करना चाहे तो उसी के साथ रिपीट कर ले, वरना कल को कोई और कहेगा कि इट डजंट कंटिन्यू वाइब्रेट कंटिन्यूअसली। सो फिर क्वेश्चन रेज होते हैं कि जो पहले ऑथर ने काम किया था तो वो आइदर यही नीडल यूज किया हुआ था, लाइक इस टाइप का नीडल है या कोई और है। सो define your word. The most general rule is define your words. और डिफाइन किस तरह करेंगे, लाइक आपने सारी चीजें डिफाइन करनी, नीडल को भी, वाइब्रेशन किस तरह हो रही थी, एंड कंटिन्यूअसली से मतलब क्या है, फॉर हाउ मच टाइम, ठीक है। सो एवरीथिंग शुड बी डिफाइंड in science actually. So and next is like scientific use of tenses. हमने इस tenses को scientific
यूज करना है लाइक इन साइंटिफिक वे, लाइक प्रेजेंट टेंस को मैंने कब यूज करना है, अगर मैं फॉर इंस्टेंस लाइक चाह रहा हूँ कि मैं प्रेजेंट टेंस को यूज करूँ या पास्ट टेंस का लाइक सिलेक्शन करूँ, ये बहुत मैटर करता है व्हेन यू राइट योर मैन्युस्क्रिप्ट। उस वक्त हमें मसला आता है कि मैं इसको प्रेजेंट टेंस में लिखूं, पास्ट टेंस में लिखूं, किस तरह लिखूं। ठीक है, सो कुछ जेनेरिक चीजें हैं जिसको जो डिस्कस किए जा सकते हैं, लाइक प्रेजेंट टेंस, राइट, जनरल नॉलेज स्टेटमेंट्स। जनरल नॉलेज स्टेटमेंट्स जो हैं वाइडली एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स हैं, एंड स्टेटमेंट्स फॉर व्हिच यू could cite text references in the present tense। तो उन सबको हमें प्रेजेंट टेंस में लिखना है। प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सी चीजें लिखनी है? जो जनरल नॉलेज के स्टेटमेंट्स हैं, बहुत एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स हैं, मींस एवरीबॉडी एक्सेप्ट लाइक अ स्टेटमेंट, हर बंदे को पता है कि ये इस तरह है। ठीक है, या लाइक वाटर इज ट्रांसपेरेंट, सो मैं क्या करूं, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, सो मैं प्रेजेंट टेंस यूज कर रहा हूं। यू गॉट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, सो स्टेटमेंट फॉर विच यू कुड साइट अ टेक्स्ट बुक, जिसके लिए हम कोई टेक्स्ट बुक रेफरेंस दे सके, उसको भी हमने प्रेजेंट टेंस में लिखना है। लाइक मोस्ट Guatemalan tarantulas are black and red are orange। ठीक है, सो ये स्पाइडर है, द गोटेमालियन स्पाइडर्स किस तरह हैं? सो दे आर ब्लैक। यहाँ पे देखिए ये एक्सेप्टेड एक टर्म है, so एक like statement है, and the author use are means the author use present tense। Similarly, on a protein rich diet, for instance कोई protein rich diet लेगा, the amount of methylhistidine in the urine increases, so es लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम पास्ट टेंस नहीं यूज करेंगे, बिकॉज अगर हम प्रोटीन रिच डाइट लेंगे, सो मिथाइल हिस्टिडीन जो है वो यूरिन में इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो दैट इंक्रीजेस, लाइक दिस विल बी नाउ इन द प्रेजेंट टेंस। ठीक है, सो जनरल स्टेटमेंट्स जो हैं वो लाइक एक्सेप्टेड स्टेटमेंट्स जो हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। सिमिलरली पास्ट यूज करेंगे। The particular observations made during a research study are bits of history, जो ऑब्जर्वेशन किसी रिसर्च स्टडी में हो चुके हों और वो हिस्ट्री का पार्ट हो, सो यूज द पास्ट टेंस व्हेन रिपोर्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। सो अपने जो रिजल्ट्स हम दे रहे होंगे, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो दे रहे होंगे, वो हम क्या लिखेंगे? वो पास्ट टेंस में लिखेंगे। लाइक ये देख लें, इन फोटोग्राफ्स ऑफ Guatemalan tarantulas we found a range of 6 to 9 dorsal, wait, ये चैट में क्या है? written in, yes, the facts are written in past tense actually, sorry in present tense, और जो रिजल्ट्स हैं वो हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। सो यहाँ पे देखें, इन फोटोग्राफ हम लाइक कोई बंदा रिजल्ट्स दे रहा है, लाइक मैं रिजल्ट्स देना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि मैंने एक स्टडी की हुई है और मैंने फोटोग्राफ्स देखे हुए हैं स्पाइडर्स के, टेरेंटुलास के। ठीक है, गोटेमालन टेरेंटुलास के। मैं रिजल्ट अब अपने लिखूंगा किस तरह? इन फोटोग्राफ्स ऑफ गोटेमालन टेरेंटुलास वी फाउंड a range of 6 to 9 dorsal strips। so dorsal strips जो हैं वो काउंट किए हैं सब में, तो वो कितने थे? 6 to 9 dorsal strips थे। so this is now they are in I will write my results in past tense because I did my experiments, I'm done with my experiments, so I will write in the past tense। am I clear? Okay, clear है ये? सर, यस सर। जी 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 बताएं, एनी क्वेश्चन? ये सर क्लियर है? क्लियर है? नहीं क्लियर है। तूबा, हाँ तूबा आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि लाइक इफ देयर इज डिस्टॉर्शन इन माय लाइक वॉइस, सो others could understand। जी सर, आपने कहा है कि जो जितनी भी हमारी बातें क्लियर होती हैं या वर्ल्ड वाइड अंडरस्टूड और एक्सेप्टेड होती हैं, उनको हम बोलते हैं, उसको हम पास्ट प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, और जो हम ऑब्जर्वेशंस अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू कर चुके होते हैं उनको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। एग्जैक्टली दैट्स ट्रू। अच्छा, टेक्स्ट में क्वेश्चन था कि लाइक रिव्यू आर्टिकल में क्या करते हैं? रिव्यू आर्टिकल में लाइक मायदा, लाइक रिव्यू आर्टिकल में हम ये कर रहे हैं,
ओके, रिव्यू आर्टिकल डिपेंड करता है। अब रिव्यू आर्टिकल में अगर मैं ये पूछना, मैं लिखना ये चाह रहा हूँ कि ये चीज इस तरह है, सो अगर वो जर्नल एक्सेप्ट चीज है तो वो मैं प्रेजेंट में लिखूंगा। अगर मैं ये कहूँ कि मायदा एट ऑल, मैं रिसर्च आर्टिकल एक्सपेरिमेंट अपने पेपर पब्लिश किया और मैं उसका रेफरेंस देकर बताना चाह रहा हूँ कि मायदा et al. Said that reported that the spiders that their spiders that when she counted when they counted and they have more than like reported legs. So मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो पास्ट टेंस में लिख दूं, रिपोर्टेड दैट और इस तरह की चीजें, कि उस ऑथर ने या उस रिसर्चर ने ये रिपोर्ट किया कि इसका कलर जो है वो नॉर्मल से डिफरेंट है उनके एक्सपेरिमेंट में। वो मैं पास्ट में कर दूंगा, बाकी सारी चीजें जो है वो मैं प्रेजेंट में करूंगा। जिसमें रिजल्ट्स आ रहे हैं उन रिजल्ट्स को मैं फिर पास्ट में कर दूंगा। ठीक है, एम आई क्लियर? That's good. Okay, like past tense में like examples हैं, 18% of patients in our study develop a mild rash. यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी result दिए जा रहे हैं, so that means like this should be in the past tense, so developed का word use हुआ। Next is how to write text. Text को हम लिखेंगे किस तरह, उसके कुछ rules देख लें। In one work session, like हम कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, उसमें आपने डिफरेंट सेशन बनाने हैं, डिफरेंट टाइम में बैठ के लिखना है। इस तरह नहीं करना कि 0 से लेकर एंड तक एक ही सेशन में बैठ के खत्म कर लें, इस तरह नहीं करना। इसको सेशन में डिवाइड करना है। You need to divide your work into different working session. In the first working session, you need to make list of ideas and notes and facts. In another session, transform the list into sentences. अब हमने like we have a list of ideas, points, we have wrote them down. Now we have to transform those into sentences and then assemble the paragraphs. Now we have paragraphs. Now we need to assemble them in a specific way. Like we have to assemble the paragraph. We need to make the paragraphs. In the end, polish the writing into lean and straightforward narrative. Like अब जो है ना, हमने लिंक बनाने हैं sentences के दरमियान, हमने लिंक बनाना है paragraphs के दरमियान, और एक flowing उसमें like there should be in one flow, like everything should be read in a flow. So to conclude, इस तरह ना हो कि दरमियान में gaps हो, कोई एक बात हो और फिर एकदम कोई और बात शुरू हो जाए, इस तरह ना हो, like चीजें जो हैं वो connected हो। अगर मैं इसको conclude करना चाहूँ, creating a scientific manuscript is a process of writing out ideas, organizing them, disassembling the organization, rewriting and then reassembling. Like मैं पहले क्या करूँगा? I will write a manuscript in a process of writing out ideas. I will write down all my ideas there. Then I will organize all those ideas. Then I will need to I will go through it, and then I will need to disassemble the organization and look like I will have to think like if this point should be before that point, like it will be more like accurate and that will be more in an understanding way. So I will disassemble the organization of my writing, and then I will rewrite things like it looks like it has been rewritten, and then I will reassemble things. So this is how perfection comes into our writings. Am I clear? Yes, sir. That's good. Okay. So write with the scientific again, the past tense. 18% of patients in our study develop mild rash. So this is again I have why this is the same. Okay. So how to write text? The skeletal outline. When writing the text of a section, start with an empty line of its skeleton. Like मैं क्या करूँगा? I will have an outline of a skeleton.
आउटलाइन, मेरे पास एक आउटलाइन होगी, लाइक मैंने कुछ भी नहीं लिखा होगा। सो मैं क्या करूंगा कि उन सेक्शंस को जो मैंने आउटलाइंस लिखे हुए हैं, आई नीड टू फिल देम आउट, like I have to write in those points, like I have to have sentences and paragraphs written in those, like the outlines. So for example, the introduction section of a scientific paper begins by summarizing a general and well accepted idea. So स्टार्ट कहाँ से होगा, मैंने अपना इंट्रो कहाँ से शुरू करना है, मैं अपने इंट्रोडक्शन सेक्शन से शुरू कर रहा हूँ। तो साइंटिफिक पेपर में लिख रहा हूँ, तो उसमें मैं क्या करूंगा, स्टार्ट में एक जर्नल और वेल एक्सेप्टेड आइडिया से मैं शुरू करूंगा, ताकि रीडर इसको पढ़े तो वो यकदम उसको न्यू चीजें ना मिले, इस तरह ना हो कि वो यकदम ही अगेंस्ट हो जाए कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, मैं उसके लिए बैकग्राउंड बनाऊंगा, मैं कहूंगा कि पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन द साउथ एशिया, इन द साउथ ऑफ एशिया। ठीक है, सो यहां से मैं शुरू करूंगा, इट्स नाइबर्स आर इंडिया, इन द नाइबर्स इंडिया, देयर आर द नाइबर्स आर इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, बंगाल एंड सो ऑन। So these are our neighbors. So इस तरह यहाँ से अगर मैं शुरू करूंगा जो well accepted facts हैं, ठीक है, वहां से फिर मैं आगे जाऊंगा, वहां से मैं फिर क्रिटिकल सिचुएशन में जा सकता हूँ, वी हैव उसमें मैं जा सकता हूँ कि इंडिया इज राइट और पाकिस्तान इज राइट, या इस तरह की चीजों में फिर जाऊंगा, दैट इज कंट्रोवर्शियल for the people in Pakistan, for the people in India. So they are controversial. So controversies में मैं बाद में जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट मैं वहां से शुरू करूंगा जो वेल एक्सेप्टेड आइडिया हो। ठीक है, फ्रॉम दिस नॉन इन्फॉर्मेशन, अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम दिस नॉन इन्फॉर्मेशन द इंट्रोडक्शन लीड्स द रीडर टू अ पर्टिकुलर अननोन एरिया दैट द पेपर प्लान्स टू एक्सप्लोर। मैं ये कहूंगा कि इस चीज पे यहाँ काम ही नहीं हुआ, पाकिस्तान के जो रेंजेस हैं, जो हिली एरियाज हैं, दे बॉर्डर द इंडिया एंड पाकिस्तान, सो वहां पे ये प्लांट स्पीशीज जो है दैट इज मोर कॉमन। ठीक है, and we need to explore that, and therefore our study group visited that area and collected that and samples and so on. So वहां के बाद में आगे जाऊंगा, कोई उसके बाद कोई कह सकता है कि ये जो है वहां पे प्लांट तो ये कम है या है, या इस तरह कोई भी डिस्कशन कोई कर सकता है उस पर। लेकिन फर्स्ट मैं कहाँ से शुरू करूंगा, मैं जर्नल एक्सेप्टेड आइडिया से शुरू करूंगा, एंड आई विल गो इनटू द डेप्थ of unknown area then in particular, and for which the paper has been designed. So introduction में सबसे पहले well defined idea, therefore and then मैं unexplored area की तरफ जाऊंगा, और ताकि मैं रीडर को मेंटली तैयार कर सकूं कि आगे जो मटेरियल्स एंड मेथड्स हैं, आगे जो रिजल्ट्स हैं, आगे जो डिस्कशन है वो इस अननोन एरिया के बारे में है। ठीक है, सो मैं नोन से शुरू करूंगा और आहिस्ता आहिस्ता मैं रीडर को अपने साथ लेके जाऊंगा। समझ आ रही है? Am I clear to everybody? Yes sir. Yes sir. Okay, that's good. कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर इसको एक्सप्लेन कर दें? Please, anybody. ये सर मैं कर देता हूँ। सर सबसे पहले इधर हमने स्केलेटल आउटलाइन देनी है, इंट्रो वगैरह। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने इंट्रो लिखना है तो इंट्रो सर वो लिखना है जो कि जनरलाइज हो, एक्सेप्टेड हो। अगर उसको जनरल पढ़े, रीडर पढ़े, तो उसको पता लगे कि वाकई चीज ये जनरल है। अगर पाकिस्तान का मैं लिखूं तो पाकिस्तान सिचुएटेड इन साउथ एशिया एंड नेबर टू इंडिया, ये जनरल चीज है, हम सबको पता है। पाकिस्तान हैज 4 प्रोविंसेस, ये जनरल चीज है। इसके बाद सर हमने जो भी चीज है उसको एक्सप्लोर करनी है, उसके बाद लिखेंगे। पहले सर हम उसको जनरल बताएंगे। Exactly. अच्छा, अब ये देखें, रबिया now has a very good question. रबिया देख लें, क्वेश्चन ये है कि एब्स्ट्रैक्ट जो है वो रीडर सबसे पहले टाइटल पढ़ता है, फिर उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट पढ़ता है। तो एब्स्ट्रैक्ट में तो हमने बहुत स्पेसिफिक चीजें लिखी होंगी, बात ठीक है इसी तरह है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट जो है वो हम सबसे आखिर में लिखते हैं। मींस
In the organization, it is on the top. But in writing, ये हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हम राइटिंग में एब्स्ट्रैक्ट को सबसे आखिर में लिखेंगे, उसके बाद टाइटल से आखिर में टाइटल, और ये सेकंड लास्ट पे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट आएगा. एब्स्ट्रैक्ट में एब्स्ट्रैक्ट को स्ट्रक्चर किया जाता है, मींस कि एब्स्ट्रैक्ट हैज स्ट्रक्चर. उसके फर्स्ट 2 या 3 सेंटेंसेस जो है वो जर्नल होंगे. उसके बाद जिस चीज की कमी है, लाइक स्पेसिफिक अननोन एरिया के बारे में एक लाइन दो. उसके बाद रिजल्ट्स की बारी आती है, मींस के एब्स्ट्रैक्ट में भी अपने रिजल्ट्स ही देने हैं. मींस के एब्स्ट्रैक्ट में रिजल्ट से पहले हमने मटेरियल्स को डिस्कस करना है कि हमने एक सेंटेंस दो इस तरह हो कि वो हमने अपने मटेरियल्स एंड मेथड्स के क्या तरीकाकार यूज किया था इस स्टडी को करने के लिए, ठीक है. और उसके बाद अपने जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स हो, सबसे पीक वाले रिजल्ट्स हो जिसको आप कैश कर सकें, वो रिजल्ट्स आपने देने हैं. और उसके बाद अपने कंक्लूजन वाला एक दो स्टेटमेंट देने हैं. मींस कि आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आपके पूरे पेपर को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है. अब आपने ये इस तरह लिखना है कि रीडर जो है वो मजबूर हो आपके रिजल्ट्स देख, आपके एब्स्ट्रैक्ट पढ़ के वो मजबूर हो कि लाइक आप किस तरह ये बात कर सकते हैं, ठीक है. लाइक फॉर इंस्टेंस कोई रिजल्ट दिया हो और आपने, तो वो मजबूर हो कि वो आपका पूरा पेपर पढ़ना शुरू कर दें. इंट्रो में, अब इंट्रो से करेगा तो आपने अपनी हिस्ट्री दी हुई, अपने काम की हिस्ट्री दी हुई हो कि लोग इसके बारे में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में लाइक प्रोविंसेस कितने हैं और लाइक हिली एरियाज कितना है, हिली एरिया में कौन कौन से प्लांट्स हैं जो लाइक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान है, और वो लाइक कोई भी आपको कोई भी टॉपिक लेने. अच्छा, फिर आथर वो रीडर पढ़ेगा, फिर ये देखेगा कि आपने स्टडी किस तरह की हुई है. सो वो आपने थोड़ा सा उसके बाद अब इस एरिया को फोकस ही क्यों किया हुआ है, तो आपने थोड़ी सी चीजें उसके बारे में दी हुई हो कि ये गैप बिटवीन द नॉलेज, द प्रीवियस नॉलेज एंड द प्रेजेंट सिनेरियो, तो आपने पर्टिकुलर अननोन एरिया को टच करना है. अच्छा, इंट्रोडक्शन पढ़ के रीडर ये कहे कि यार इस पे काम होना चाहिए था और ये वाकई ये इंपॉर्टेंट एरिया है, सो इट नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड. मटेरियल्स एंड मेथड में इसके बाद मटेरियल्स एंड मेथड शुरू होता है, उसमें आपने दिया हो कि आपने ये काम जो अननोन एरिया है इसको एक्सप्लोर करना किस तरह है, ठीक है, आपने काम किया किस तरह है, वो आपने सारा कुछ दिया हो कि आपने फील्ड विजिट किए, वहां से लोगों से पूछा, तो ये किया तो वो किया, वो सारा कुछ आपने मटेरियल्स एंड मेथड्स में दिया हो. उसके बाद रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में आपके रिजल्ट्स हों, लाइक व्हाट यू फाउंड एक्चुअली, कौन कौन से एनालिसिस टूल्स यूज किए वो आपने मटेरियल एंड मेथड्स में एक्सक्यूज मी यूज. सर. जी जी बताएं. सर, ये जो आप बता रहे हैं ये मोस्टली वो प्रैक्टिकल लैब रिसर्च के ऊपर है ना, तो जो रिव्यू Exactly. जो आर्टिकल्स हम लिख सकते हैं ना, वो रिव्यू आर्टिकल्स है अभी जो इस वक्त हम लिख सकते हैं. जी तो आप अगर इसको थोड़ा सा उसके साथ रिलेट करके बता दें कि अगर हमने किसी चीज की थ्योरेटिक ही रिसर्च की है तो उसको नहीं इन देखें. स्टेप्स के साथ. अच्छा जी माहिदा, सॉरी आपका तुबा, सॉरी तुबा, ओके सर आपका नाम यहाँ आ नहीं रहा था. अच्छा तुबा, इस तरह है कि जरूरी नहीं है, ये हमें समझना इस वजह से जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि आप अभी लाइक सिर्फ रिव्यू कर रहे हैं, हमने अभी सारी चीजें समझनी है. आप रिव्यू लिख रही हैं, आपके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी है रिव्यू लिखने की, ठीक है. तो आजकल जो हम रिव्यू देख रहे होते हैं, रिव्यू आर नॉट सोली रिव्यू, वो रिव्यू आर्टिकल्स नहीं होते. रिव्यू में लोगों ने ये किया होता है, आप अक्सर रिव्यू देख लें, आपको खुद मिल जाएंगे, रिव्यू देख लें, उन्होंने रिसर्च भी की होती है. रिसर्च किस तरह की होती है, लाइक लोगों ने ये किया होता है रिसर्च, लाइक आपने रिव्यू में रिसर्च किस तरह करनी है मैं आपको बताता हूँ. लोगों ने इस तरह किया होता है, लाइक मैं कोरोना वायरस पे काम कर रहा हूँ और कोरोना वायरस पे रिव्यू लिखना चाह रहा हूँ. सो रिव्यू में जब लिखूंगा, रिव्यू में मैं चाह रहा हूँ कि मैं रिसर्च को थोड़ा सा टच करूँ. तो रिसर्च को किस तरह टच कर सकता हूँ, लाइक हाउ आई हैव नो लैब अपॉर्चुनिटी, लैब अपॉर्चुनिटी मेरे पास है नहीं, कोई इक्विपमेंट भी नहीं है. मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ कि मैंने लाइक मटेरियल मेथड में लिखूंगा मैंने कौन कौन से वेब पेजेस देखे, लाइक मैंने गूगल स्कॉलर यूज किया, पबमेड यूज किया, और लाइक डिफरेंट सर्च इंजन यूज किए, ठीक है. आई विल एनलिस्ट दोस. उसके बाद मैं देखूंगा, मैं लिखूंगा कि इतने आर्टिकल्स एक साल के अंदर, इतने आर्टिकल्स लाइक 200,000 articles have been published in this just one like year, ठीक है. उन 20,000 आर्टिकल्स में इतने रिव्यू आर्टिकल्स हैं और इतने जो हैं
वो जो है वो आपने ये देखें, आप आपका सिर्फ रिव्यू आर्टिकल नहीं, आप डेटा जनरेट कर रही हैं। समझ आ रही है यस सर। कि लाइक यू जी हैव जी नाउ स्टैटिस्टिक्स, आप एक टेबल बना सकती हैं, आप स्टैटिस्टिक जनरेट कर रहे हैं। अब उन आर्टिकल्स में इतने आर्टिकल्स जो हैं वो बता रहे हैं कि अब वो इन कंट्रीज से ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। स्टेटिस्टिक्स है WHO जो है वो फर्स्ट ईयर के इस एक साल में जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो क्या बता रहे हैं कि कौन से कंट्री में कोरोना ज्यादा है, कहाँ पे कम है, और जो वो है। अच्छा, इन पेपर्स में इतने पेपर्स ये बता रहे हैं कि इन कंट्रीज में लाइक कोरोना के रीजंस क्या हैं, तो इतने परसेंट पेपर्स में रीजन ये बताया हुआ कि ट्रैवलिंग की वजह से है। इतने परसेंट लोग कह रहे हैं कि लाइक जो सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा होने की वजह से, सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होती हैं। अच्छा, कैंसर के साथ लिंक कर सकते हैं, लाइक कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो लाइक वो बता रहे हैं कि लाइक कितने परसेंट कैंसर के साथ इसको लिंक किया जा सकता है। वाटर जो है वो कंटेमिनेटेड अगर हो तो उसके साथ किस तरह रिलेट किया जा सकता है। लाइक आप डिफरेंट रीजंस जो है वो वहां से आप लाइक यू हैव नाउ वो जो पेपर है वो आपका सिर्फ रिव्यू पेपर नहीं होगा वो। अच्छा, इसके साथ आप ये भी कर सकती हैं कि लाइक एक जो है क्वेश्चनियर बनाएं जी एंड वो लोगों के साथ शेयर करें ऑनलाइन, और वहां से आप डेटा ले लें तो स्टेटिस्टिक्स। अच्छा, फिर मैंने अपने पॉपुलेशन में देखा तो हमारे पॉपुलेशन में इतने परसेंट लोगों को वेंटिलेटर का पता ही नहीं है, इतने परसेंट लोग कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है, इतने परसेंट लोग कह रहे हैं कि हॉस्पिटल रिपोर्ट ना करें तो हॉस्पिटल में लाइक हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे तो लाइक डेथ इज द एंड, अब घर में रहेंगे तो ठीक यस रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चनियर्स बना के सो उसमें परसेंटेज और इस तरह के आप नाउ नाउ वो पहले रिव्यू आर्टिकल था, लेकिन जी यू हैव कन्वर्टेड दैट इनटू अ सिग्निफिकेंट पीस ऑफ वर्क, लाइक अलोंग विद दैट लाइक आपने इसको लाइक यू मेड इट लाइक समथिंग एल्स। सो वहां पे आप ये सारी चीजें फिर आपका रिव्यू आर्टिकल है, लेकिन आपने प्रेजेंट पास्ट और इन चीजों का फिर ख्याल रखना है। यू गॉट माई जी पॉइंट? जी सर, थैंक यू। First of that is like collect information from outside resources. बाहर के resources हैं उनसे हमने information किस तरह collect करनी है, like if working on a part of the paper that is built largely from outside information. This is just like review article में क्या होगा, like या रिसर्च आर्टिकल में दो पोर्शंस इस तरह होते हैं रिसर्च आर्टिकल्स में कि वो अपना काम उसमें कम होता है, बाकी लोगों का काम ज्यादा डिस्कस किया जाता है। The first of that is intro and discussion. Introduction और discussion part जो है वो largely from the outside resources होता है, like previously लोगों ने क्या किया हुआ, history क्या है और लोग इसके बारे में क्या कह रहे होते हैं, different research में क्या किया होता है, क्या किया हुआ है। So वो सारा कुछ जो है ना intro और discussion, they are from the outside resources. So probably use books and articles, तो books और articles use कर लें। If working on a section built largely from own experiment, अगर हमारे अपने experiments हैं तो उसमें such as materials and methods are results, so use notebook are computerized like a lab ना हमने ओके आवाज आ रही है मेरी? हेलो? तो गई नहीं थी सर, दरमियान बहुत में, कट रही थी। ओहो कुछ सॉरी। भी नहीं सुनना। ओके दोबारा समझ लें। जो हमारे लाइक रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं या रिव्यू आर्टिकल्स होते हैं, खासकर रिसर्च में दो चीज़ें जो हैं जिसमें हम पुराना काम या पिछला काम को लिखते हैं और डिस्कस करते हैं, और वो दो सेक्शन कौन से हैं, इंट्रोडक्शन और डिस्कशन पार्ट।
So सर अब introduction or आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. oh, so wait. Thanks for like reminding me. अभी हो रही है? Yes sir. Okay. So introduction और discussion part जो है they are important और उस इन दो पार्ट्स में हमने अपना काम कम डिस्कस करना है और जो पिछला काम हुआ है लोगों ने जो काम किए हुए उसको डिस्कस करना है. हमने बैकग्राउंड बनाना है अपने काम के लिए, अपने रिजल्ट्स के लिए. ठीक है, लाइक मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पिछले लोगों ने क्या काम किया हुआ है, उसका बैकग्राउंड सारा इंट्रो में दे दूंगा. मेरे रिजल्ट जो आए हुए हैं वो लाइक वो पुराने काम के साथ टैली कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो क्यों टैली नहीं कर रहे या क्यों टैली कर रहे हैं, क्या रीजंस हैं, वो सारी रीजनिंग मैं डिस्कशन में करूंगा. सो इसका ये मतलब हुआ कि इन इंट्रो एंड डिस्कशन I will use outside resources. So outside resources के लिए मैं क्या यूज करूंगा, बुक्स को लिखूंगा, बुक्स को पढ़ूंगा, आर्टिकल्स को पढ़ूंगा और मैं जो अपने रिजल्ट्स हैं, मेरे अपने एक्सपेरिमेंट्स हैं, लाइक उसके सेक्शंस कौन से हैं, मटेरियल्स एंड मेथड्स एंड रिजल्ट्स. सो मटेरियल्स एंड मेथड्स और रिजल्ट्स जो हैं ये इस तरह के सेक्शंस हैं जिनके लिए मैं अपना जो डेटा बुक है, लैब डेटा नोटबुक, वो यूज करूंगा, या अगर मैंने कंप्यूटराइज रिसर्च डायरी बनाई हुई है सो मैं वो यूज करूंगा उसके राइटिंग के लिए. समझ आ गई इसकी? Yes sir. Okay, and one more thing. Once you are done with writing, at the end you need to go through the whole article. उसमें like उसमें clarity और like it should to be make it more concise. A good scientific paper is crisp and to the point. So ये to the point होना चाहिए and crisp होना चाहिए, like it have some like it is like in like active thing, like आप कोई पढ़े हैं तो like they enjoy the author actually the reader actually needs to enjoy your writing actually. So वो बोर ना हो. So उसके लिए आपने क्या करना है, check each sentence against the point of the paragraph. तमाम पैराग्राफ जो भी लिखे हुए हैं, पैराग्राफ का एक थीम होगा, तमाम पैराग्राफ का एक थीम होना चाहिए. ठीक है, so every sentence should be in the line with that paragraph. किस तरह आपने चेक करना है? So check, there is examples. If the sentence is tangential with detail unnecessary for the clear presentation, means कि आपने एक बात की हुई है like mountains पे और एकदम आप बात कर रहे हैं प्लेन्स की, ठीक है, और दोबारा माउंटेन्स शुरू हो जाते एक ही पैराग्राफ के अंदर, तो वो प्लेन्स के बारे में जो आपने सेंटेंस लिखा हुआ है वो निकाल लें वहां से, डिलीट दैट. इफ द सेंटेंस लाइक इसको समझ लें, इफ द सेंटेंस इज टेंजेंशियल with details unnecessary for a clear presentation, take the sentence out. If the sentence duplicates other sentences, take it out. Like कोई एक सेंटेंस है और वो डुप्लीकेशन आ रही है कहीं और पे, वो दोबारा वही बात आ रही है तो वो डिलीट कर दें. ठीक है. If the sentence contains only non-scientific details of human interest, take it out. Like कोई non-scientific details है किसी चीज के बारे में and वो they are not necessary for and they are not of human interest, so delete that out. ठीक है, got it? Easy है? Yes sir. ठीक है. Yes sir. So you need to thoroughly check your like manuscript. Okay, words are too much important and these are actually advices for non-native speakers. Non-native speakers जिस तरह हम हैं, हमारे लिए कोई advices हैं वो ये देख लें कि like what we need to do. Use simple words like write use. Use लिखें, not employ. Employ ना लिखें. Like I use this. I use like cup for tea. So मैं ये नहीं लिखूंगा I employ cup to take tea. ठीक है. So try to write use instead of employ. Turn adjectives into numbers. Like इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि adjectives को नंबर में कर दें. Like write two, not several. ठीक है. तो several word ना लिखें, 2, 3, 4 like digits लिखें, numbers लिखें. Got it? Yes sir. Yeah, got it. Good. और phrases के बारे में
डोंट यूज मेटाफर्स, लाइक चीजों को कंपेयर करने के लिए जो मेटाफर्स यूज होते हैं, डोंट यू डू दैट. ऑफन दे डू नॉट ट्रांसलेट प्रॉपरली. फॉर एग्जाम्पल, राइट, लिखें, द मिक्सचर could not be poured, are beads of the mixture stuck to the sides of the tube. मिक्सचर के बीड्स जो हैं वो ट्यूब के साइड पे स्टक हो गए हैं. ये ना लिखें द मिक्सचर वाज एज थिक एज ग्लू, मींस के मिक्सचर को ग्लू के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि ग्लू के फिर और कोई प्रॉपर्टीज होंगे. आपने मिक्सचर को इसके साथ लाइक इस बात को साबित करने के लिए आपने ये कह दिया और आगे जाके मिक्सचर की कोई और प्रॉपर्टीज आगे आ रही हैं. सो डोंट यूज मेटाफर्स. Got it or not? Got it, sir. Okay, that's nice. Okay, sentences जो है वो देखें. Make each sentence short. Try to write short sentences. अगर for instance if a sentence is longer, it took 3 or 4 lines, so try to cut that long sentence into 2 or 3 short sentences. ठीक है, to make it more clear. In this way you will avoid grammatical errors and like it will be more clear actually. समझ आ रही है? Yes, sir. Okay, and put one idea into each sentence. एक सेंटेंस में एक आइडिया से ज्यादा ना लिखें. ठीक है, don't write multiple idea in a single sentence. For each idea, for one in a one sentence, one idea should be discussed.